Sat Shri Akal, Namaste, hello. Today I am here to tell you everything about 10th class biology topics. Here we start with the first topic, that is transportation in plants. Transportation in plants is less elaborative than in animals, as plants are less active and they require less supply of materials from outside and also from inside. From inside, plants provide their materials themselves. There are materials which are needed by plants are oxygen, carbon dioxide, water and minerals. Oxygen, carbon dioxide, water and minerals are supplied from outside, whereas organic foods and hormones are supplied from inside. They are supplied after they are synthesized from the cells, and they are distributed by the transport system. In transport system we have two things, that are xylem and phloem, which we study further. Now, what is photosynthesis? Photosynthesis exchange of oxygen and carbon dioxide through a passive process called diffusion. Photosynthesis में gases का exchange होता है with the passive process, जैसे cell to cell, higher concentration to lower concentration. Water and minerals are absorbed mainly from soil and transported upward through a specific tissue system called xylem. वाटर एंड मिनरल्स जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं. ऑर्गेनिक फूड जो लीव्स में बनता है और जो हार्मोन्स होते हैं वो सभी फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं. नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? Xylem is made up of four elements, that are tracheids, vessels, parenchyma, sclerenchyma, and phloem is made up of four elements. These are sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, and phloem sclerenchyma. There is two kinds of transportation, that is transportation of water and minerals. Second, transportation of food and other substances. Transportation of water and minerals occurs by xylem, and xylem has two main components which are useful in transportation. They are xylem vessels and xylem tracheids. Similarly, in phloems, sieve tubes play an active role for the transportation. First, we have transportation of water and mineral. Now, why water is needed? Water is a raw material which is used in photosynthesis. इन फोटोसिंथेसिस वाटर में से जो ऑक्सीजन होती है उसे निकाल लिया जाता है, और जो हाइड्रोजन होती है उसे कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है. एंड वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड इन ट्रांसलोकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स. जो केमिकल सब्सटेंसेस, फूड कह लो, हॉर्मोन्स, दे ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन लीव्स एंड शूट्स, एंड दे आर ट्रांसफर्ड to whole of the plant body with the help of water. Water also maintains internal communication of the plant body. Now, transportation of water and minerals involve three interconnected processes. These are absorption of water and minerals through root hair, then ascent of sap or upward movement of water and minerals, and third is transpiration. First of all, we will continue with absorption of water. How water is absorbed? Water is absorbed through roots, which is absorbed from soil solution, and this soil solution contains water. From root hairs, water enters into the epidermal cells of root apex, then it enters cortex, and in cortex they move from cell to cell, and then they enter passage cell to xylem, and from this xylem they enter whole of the plant body. And here, how water is absorbed? Now question comes, how water is absorbed? There is scarcity of water in the root hair, but there is abundance of water in soil solution. So water moves from high concentration to lower concentration. Water moves from soil to the root hair, and then from root hair, with the help of diffusion process, they enters epidermis, then cortex, then endodermis, pericycle, and then xylem, and from xylem they move to the whole body of the plant. This whole process, when water migrates from root hair to cortex, then to endodermis, then to xylem, this whole process is called as lateral transport. Similarly, minerals move from higher pressure to lower pressure. One common thing, when there is movement from higher to lower according to the concentration, it is known as passive transport. But when the transportation is against concentration, then the process is called active transport, and active transport occurs with the help of ATP. Now, how the
water from xylem transport to the whole of the plant. This occurs with the help of vessels and tracheids. These vessels and tracheids form a continuous chamber and then they are transported. Now we study it in detail. Here we have structure of plant. This is the root, section of root. Root here to epidermis, then to cortex, and then to xylem. And from xylem it enters to the xylem vessels and tracheids column and then enters to the leaf, where it is used in photosynthesis and other processes. Now upward movement of water and minerals has two theories, that is root pressure theory and second is transpiration pull or cohesion tension theory. Root pressure theory is applicable only to small plants like herbs, whereas cohesion theory is applicable to all tall trees and is more acceptable. First we have root pressure theory. According to this, roots absorb water and exerts a pressure which pushes water upward. जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर जो एब्जॉर्बेंस के बाद वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपवर्ड पुश हो जाता है. ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल हर्ब्स में ही बताती है कि जो वाटर है वो कैसे पुश होता है. बट द मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी वी हैव इज कोहेजन टेंशन और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. It also explains transportation in tall trees. It states that force responsible for upward movement of water is transpiration pull, generated in leaves, which pulls the water column filled in xylem, tracheids and vessels. जो xylem, tracheids and vessels होते हैं वो कॉलम बना लेते हैं. उनमें क्या पिट्स होती हैं और परफोरेशंस होती हैं जिसकी वजह से एक कॉन्टीन्यूस कॉलम हो जाता है. और जो कोहेजन और टेंशन थ्योरी, कोहेजन होता है दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स और टेंशन होता है एडहेशन होता है मॉलिक्यूल और जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स. एक तो यहाँ पे फोर्स लगेगी वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में और दूसरी लगेगी जाइलम एलिमेंट एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. ये दोनों फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं एक कॉन्टीन्यूस कॉलम बनाने के लिए. और जो ये पूरा कॉन्टीन्यूस कॉलम है ये जाइलम वेसल्स एंड ट्रिकीड्स में बनता है और ये पुल हो जाता है जबकि ट्रांसपिरेशन होती है. नाउ वी विल गो थ्रू द इवेंट्स. वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट्स थ्रू रूट हेयर की हेल्प से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. फिर जो वाटर एंड मिनरल्स है वो कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल की हेल्प से जाइलम में चले जाते हैं. जो वाटर एंड मिनरल्स को कंबाइनली हम सैप कह सकते हैं, ये मूव करते हैं ट्रकीड्स एंड वेसल्स में अपवर्ड. ट्रकीड्स एंड वेसल्स डेड सेल्स होते हैं, ये खुद कुछ नहीं कंज्यूम करेंगे, सिर्फ ये क्या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे. जैसे कि मैंने पहले बताया ट्रकीड्स और वेसल्स में परफोरेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो एक कॉन्टीन्यूस कॉलम बना देती हैं. हियर वी हैव lumen of tracheids and vessels are both filled with sap, forms a continuous row or column which cannot be pulled away from xylem walls. क्यों नहीं xylem wall से पुल होंगी अवे? क्योंकि उनमें एक तो adhesion force होती है और दूसरी होती है cohesion force. cohesion होती है दो water molecule के बीच में force और adhesion होती है water molecule और जो xylem vessel है उसकी wall के बीच में force. Then leaves exerts the pressure and this column is pulled from top and the pull is generated by a process called transpiration pull. Whenever transpiration occurs, there is a scarcity of water in the leaves which leads to pull, and this pull pulls the water column from the xylem. Now what is transpiration? Transpiration is a loss of water in the form of vapors from living tissues of aerial parts of plant. जो भी aerial parts होते हैं plant के, चाहे उसे हम green stem कह लें चाहे green leaves कह लें, उनमें से क्या है जो water vapors हैं वो outside move करते हैं to the environment and इस process को कहते हैं transpiration. Transpiration occurs by a process of diffusion through stomata. Stomata क्या होता है? Small pore जिसे kidney shaped guard cells गार्ड करती हैं और जो उनमें जब वाटर की मूवमेंट इनसाइड आउटसाइड होती है रिस्पेक्टिवली दे कॉजेज क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. हियर वी कैन सी जब गार्ड सेल्स स्वेल अप होंगी तो जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, जब वो श्रिंक होंगे तो जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा. जब पोर ओपन होगा तो जो वाटर है वो उससे आउटसाइड मूव कर जाएगा. तो जो
लीफ है उसमें वाटर की स्कारसिटी होगी, उसे वाटर चाहिए, तो वो क्या पुल जनरेट करेगा, उस पुल की वजह से जो जाइलम और वेसल में वाटर कॉलम बना है वो ऊपर को पुल होगा और वो वाटर जो है वो लीव्स में चला जाएगा. That's all about transportation of water and minerals. Now we have transportation of food and other substances. The food and other substances, as we all know, are synthesized in leaves because leaves are the kitchen of a tree. The hormones which are required for growth and development are synthesized in shoot and root tips. The carbohydrates are synthesized in green cells of leaves. They are transported to non-green parts with the help of a transportation system which is known as phloem, and these carbohydrates are used in metabolic activities. जैसे कि प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वैसे ही जो हार्मोन्स है वो भी उन्हें ज़रूरत होती है. एंड द हार्मोन्स आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्ब्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स and other things. These hormones causes many growth effects like growth of shoot, root, leaves, height of plant. They did a lot of things, and for their work they have to be transported to the particular site, and this transportation is done by the help of phloem. And these phloem tissues, the main tissue in phloem is sieve elements. The phloem is a complex permanent tissue. It also runs parallel with the xylem strands. It has sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, and fibers. The carps are translocated through sieve tubes. Sieve tubes has active protoplasm, so they provide energy for the transportation. How it occurs? Phloem elements remain in close contact with mesophyll cells of leaf from where they grab carbohydrates and transport it to whole of the plant. Now we have two types of movement of plants of food, that is upward movement and downward movement. Downward movement is to stem and roots. Upward movement is to birds, flowers, fruits, where the food is consumed and stored, and also during the germination of seeds. Food materials stored in cotyledons and endosperms are translocated upward to the growing apex. न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स में जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन. सच ए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन वाइटल प्रोसेस है, क्योंकि जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होगा उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी क्या है रेस्पिरेशन में यूज़ होगी, बिल्डिंग और मेंटेनिंग होगी ऑर्गन्स की, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे. थैंक यू. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना.